Would you let AI decide your next property investment? What if आप AI से पूछ के ये देख सकते हैं कि दुबई में 8% का ROI कौन से एरिया में मिल रहा है, या गुड़गांव में नेक्स्ट 5 साल तक कहाँ के रेंटल स्टेबल ग्रोथ पे दिखाई दे रहे हैं? वेल, इट्स नॉट अ साइंस फिक्शन एनीमोर. It's happening in Dubai through PropTech, but the big question is whether India can catch up. Let's decode how AI is changing real estate and what it means for investors like you. Let's start with the basic. PropTech, property plus technology, means the use of AI, data, and automation to smartly predict how we buy, sell, or manage any property. In predictive analysis, AI crunches data, historic data like sales क्या थी, कितने transactions हुए, क्या rental yields थी, what is the future infra work that is going to happen, and based on that, they give you hotspots which is good for investing in the future. And for example, using PropTech, it was predicted that JVC will be a good hotspot and grow about 20% in the future, which is exactly what happened and between 2022 and 24. Then there are AI chatbots जो brokers को replace कर रहे हैं, जिससे हमारी लीड्स की फनल हो जाती है कि भाई कौन सी रियल लीड्स हैं या कौन से ऐसे ही फ़ोन कॉल्स हैं. Furthermore, these chatbots are also being used as a CRM tool. जहाँ कस्टमर्स की कोई भी queries हो, these chatbots can help in answering those queries, and there's no longer a person required over a phone call for these. AI is changing the way a property can be managed. वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई कहाँ लीकेजेस हैं, कहाँ ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, कहाँ कंजम्पशन अब नॉर्मल हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट पीपल हैव, द डेवलपर्स हैव स्टार्टेड reducing their maintenance cost by up to 30%. And last but not the least, virtual tours. भाई कहीं भी रिमोटली बैठे आपको वॉक थ्रू मिल सकता है कि मेरा फ्लैट कैसा दिखेगा, किस चीज़, कलर कॉम्बिनेशन, लुक एंड फील, everything can be shown through digital virtual tours through these AI tools. For projects like Damac Hills and Shobha Heartland, आप NRIs के लिए उन्होंने virtual tours किए हैं, and you can sit at home and see what you're going to buy in these projects. Dubai Land Department के property transaction are powered through AI, and they are using blockchain enabled property contracts. And did you know that by 2025, the PropTech market is expected to hit 94 billion? Dubai is emerging as a PropTech leader. And with Smart Dubai initiative, government is using blockchain and AI for property records, aiming to go 100% paperless for all property transactions. और अगर मैं developers की बात करूं तो MR is using AI for predictive maintenance and customer interactions. DMAC is integrating all the property management apps with AI. Shobha Realty is using digital twins to give customer experience for their new property launch. There are few startups like Bayut and Dubizzle which give AI powered property recommendations. Then there is Smart Crowd which enables fractional ownership through AI and is regulated via DIFC. In Dubai, in today's time, you can buy, rent, and register a property without even visiting any office, thanks to AI and blockchain. In India alone, there are about 450 PropTech startups जो आपको हेल्प कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, बाइंग प्रॉपर्टी, गिविंग यू प्रिडिक्टिव एनालिसिस टू हेल्प यू इन्वेस्ट स्मार्टर. नो ब्रोकर यूज कर रहा है एआई टू मैच टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स using their behavioral patterns, whereas Squareyard is using predictive pricing to give investors undervalued property suggestions. Prop equity and CRE matrix, they use analytical tools जो आपको देंगे yield analysis and market risk की scoring. India has started their own Digital India land record mission, and Karnataka and Maharashtra are piloting this mission, and the aim is to digitalize property records in India using blockchain and AI.
वेल इंडिया में आज भी हम जमाबंदी और मैनुअल रिकॉर्ड्स में फंसे हुए हैं, while in Dubai the property is transferred within minutes thanks to blockchain and AI. भाई इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? इन्वेस्टर्स को अंडर वैल्यू डील मिल सकती है थ्रू AI प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड इट इज ईजियर टू लीज आउट द प्रॉपर्टीज थ्रू टेनेंट मैचिंग, स्पेशली इन दुबई. टेनेंट की स्क्रीनिंग हो जाती है एंड योर प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड योर राइटफुल लीज लेसी through these apps. Not to forget faster due diligence. ओनरशिप रिकॉर्ड मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज मिल जाएंगी. सो इट इज़ मच ईजियर फॉर ड्यू डिलिजेंस using AI for investors in the future. And of course, this will open the doors for cross-border investments, especially दुबई में आज की डेट में आप यहाँ घर बैठे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सी एवरीथिंग एंड बाय, रजिस्टर, रेंट through AI sitting in your own home or office in India. Of course, it comes with a lot of risk because data है, misuse का risk है, privacy आपकी hinder हो सकती है. Because all these tenant matching and all these apps, these collect a lot of behavioral data of customers. But will AI replace the brokers? Not yet. भाई आप AI को use करके you can give proper guidance to the investors. It's a tool which will help you and empower you to close your deals faster doing your research. And AI can give options, suggestions based on questions asked by somebody. But as a broker with your experience, you ask penetrating questions which gives you more details and help you in identifying risk और किस लोकेशन पे लगाना है, पर्पस क्या है, उस हिसाब से आप उनको बेटर गाइड कर सकते हैं. AI कैन ओनली प्रिडिक्ट, नॉट फील. मार्केट साइकोलॉजी, इमोशंस स्टिल मैटर. ओवर रिलायंस ऑन डेटा यू कैन मिस द ग्राउंड रियलिटी, ट्रैफिक, लोकल कल्चर, कहाँ पे क्या चल रहा है, what is driving investment in terms of emotions. In India, AI is just starting, but जब इसका इंटीग्रेशन रेरा और लैंड रिकॉर्ड्स के साथ हो जाएगा, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स इन द फ्यूचर and it will change the way people invest. In Dubai, AI makes buying property seamless, but you still need somebody to guide you on location and risks involved in each investment area. Would you let AI pick your next investment? Comment below. And if you want a curated list of PropTech apps you should use, please DM AI and we'll give you a toolkit of all the PropTech apps that people are using in Dubai right now. Thank you for watching Real Estate with Siddhant. Signing off until next week, your very own chartered accountant turned real estate consultant, Vaibhav Sharma.